सो गैस निकलने के लिए हम लोग रेडी है और सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। ये तो छोड़ दो, ये एंड बाकी का रूम कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा गंदा तो लगता ही है जब कोई चेकआउट करता है। ये मेरा सामान है जो कि होटल में रखने वाला हूँ। एंड दिस इज़ अनदर बैग, दिस इज़ द रूम, ला मॉन्टेना। एंड बढ़िया प्रॉपर्टी है भाई, आके स्टे कर सकते हो, बहुत लवली प्रॉपर्टी है। एंड दिस इज़ द बाथरूम जो कि मैंने आपको पहले दिखाया नहीं था। दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव रूम क्योंकि थोड़ा ऊपर में है। एंड या दैट्स इट। हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, दिस इज़ मी। चलो गाइस निकलते हैं, बहुत देरी हो गया, जाना है बैंगलोर। बाय बाय। सो फाइनली गाइस चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, चलो बोल चुका हूँ। एंड या दैट्स द स्टेयर्स एंड दिस इज़ द 602 रूम। हाँ, लवली प्रॉपर्टी। भैया को बोला मैंने, भैया मत रखना फ्लोर पे, ये मेरा नया बैग है। वो भी ठीक है, वो लेके जा रहे हैं, बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा है। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? हाँ, अविनाश। So if you come to this property, please meet Avinash. He's a very good guy. And yeah, देखो मेरा हेलमेट कैसे लेके जाना पड़ रहा है, कितना झमेला होता है यार। It's like a memory, you know, सब कुछ रखना है and all that. So yeah, that's it. Property, view. Okay, let's go. ₹10. Look at the parking, man. Lovely parking. Which imparts heaviness to the tea when the tea rubs on its surface while passing through it. The tea then enters the oxidation area where it is collected in stainless steel trays and allowed to remain there for almost an hour. During oxidation, the enzymes in the tea react with the oxygen in the atmosphere and changes in color and smell take place. After these changes, the tea enters the produced by a heater. Tea drying takes almost 16 minutes. Stages are cleaning, graining and packing. The fiber in the tea which comes from the leaf stalk of medium and light teas, flavored teas like cardamom, chocolate, lemon, ginger, Earl Grey, green tea. You can now go down to the manufacturing area and see the machines. You could also taste our tea and buy teas you like from the sales counter below. Thank you. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
It sound right, boy. It sound right, boy. तो गाइस वहाँ पे जूता सेंटर एंड जूता आपको यहाँ खोल के वहाँ पैकेट में डालना है और यहाँ से आप लोग एग्ज़िट होते हो। तो जल्दी जल्दी देख सकते हो बट वाट वी आर प्लानिंग इज़ कि टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड ऊपर से हाइजीन का इशू है बिकॉज सेम पैकेट में ना वो जूता डालते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो चप्पल है, मैं तो कहीं भी डाल दूँगा, लेकिन वही है कि किसका जूता कितना गंदा है, वही हाइजीन इशू मेरे को थोड़ा सा है। सेम पैकेट में नहीं डालना है मेरे को। अगर वैसा भी होता तो मैं जूता बाहर से ही खोल के था, खाली पैर ही आ जाता। या तो मेरे को आइडिया था कि मैं यहाँ जूता रख दूँगा, लेकिन चोरी हो जाएगा। जूता वो कैरी बैग के अंदर डाल के अंदर में डालना है। तो इसलिए सोचे कि मतलब छोड़ो, अंदर में क्या ही देखना है, और वीडियो रिकॉर्ड नहीं पता अंदर में है कि नहीं, मे भी शायद होगा। एंड दिस इज़ द एग्ज़िट। अब अगर यहाँ से निकलोगे तो यहाँ से भी एग्ज़िट है, वहाँ से भी जा सकते हो अदर साइड। तो प्लान करें कि बाहर देखना, क्योंकि बाहर हम लोग देखे नहीं है ठीक से। एंड दिस इज़ द आउट ऑफ व्यू। एंड इनको कहना है कि जूता नहीं खोलोगे तो पैलेस गंदा हो जाएगा। दैट इज़ ट्रू ऑल्सो बिकॉज द फ्लोरिंग हैज़ बीन डन वेरी प्रॉपरली, सो इसलिए सो इट्स ओके। जो हिस्टोरिक प्लेसेस है उसको तो मेंटेन करना चाहिए, बट विद लैक ऑफ टाइम ऑल्सो बिकॉज नो टाइमिंग का भी इशू है। बैंगलोर जल्दी पहुँचना है एंड दैट्स व्हाट। हम अभी कुछ बैंगलोर से कुछ अराउंड 80 किलोमीटर्स दूर होंगे। 80 किलोमीटर जो होगा, शायद 80 किलोमीटर दूर होगा। ये रेस्टोरेंट आपको दिखाता हूँ मैं, कामत रेस्टोरेंट गाइस, कामत। और हम लोग अभी खा रहे चिल्ली पकौड़ा, या चिल्ली पकौड़ा एंड चाय। दैट्स इट फॉर नाउ। दोपहर खाए थे फ्रेंच फ्राइज एंड फ्रूट जूस, जैसे मौसम भी जूस। फिर चलेंगे अपना होटल, वहीं रह के रहेंगे। ये तो अपना उतर जाएगा यहीं पे दोस्त लोग, हम चल जाएंगे अपना होटल। फिर बाद में हिसाब किया जाएगा जो भी है, और उसके बाद दिखाऊंगा मैं अपना सिटी टूर। ये आने वाला है एनीवेज सब कुछ। तो मिलते किसी दूसरे व्लॉग में दूसरे व्लॉग में। प्लीज़ गिव इट अ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। टी फैक्ट्री कैसा लगा एंड चॉकलेट फैक्ट्री एंड पैलेस से घुस नहीं पाया था वहाँ पे, क्योंकि यू नो इट। नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं पनी पापा के साथ, मे बी नेक्स्ट 2 years में ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर जाएंगे दशहरा के टाइम पे। दैट इज़ द बेस्ट है, दशहरा इज़ द बेस्ट टाइम। ट्राई करेंगे, होगा तो ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर।